ડભોઈ વાઘોડિયા રિંગ રોડ સ્થિત સંરચના ધ પ્રિસ્કૂલમાં વાર્ષિક રમતોત્સવની ઉત્સાહભેર ઉજવણી. વડોદરા શહેરના ડભોઈ વાઘોડિયા રિંગ રોડ પર આવેલી સંરચના ધ પ્રિસ્કૂલ ખાતે દર વર્ષની પરંપરા મુજબ આ વર્ષે પણ વાર્ષિક રમતોત્સવનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ રમતોત્સવમાં મોટી સંખ્યામાં બાળકો તેમજ વાલીઓએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. રમતોત્સવનું આયોજન સોમા તળાવ સ્થિત વ્રજ પાર્ટી પ્લોટ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પ્લે ગ્રુપ, નર્સરી, જુનિયર કેજી અને સિનિયર કેજીના બાળકોને વિવિધ રમતગમત પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવા મોકો આપવામાં આવ્યો હતો. બાળકોના અભ્યાસ સાથે સાથે રમતગમત ક્ષેત્રે પણ વિકાસ થાય તે હેતુથી સ્કૂલ દ્વારા સતત પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે. કાર્યક્રમ દરમિયાન મલખમ, જિમ્નાસ્ટિક, ફ્રોગ જમ્પ, કાંગારૂ રેસ, બટરફ્લાય રેસ સહિત અનેક મજા ભરેલી રમતો યોજાઈ હતી. ખાસ વાત એ રહી કે આ રમતોત્સવમાં વાલીઓએ પણ વિવિધ રમતોમાં ભાગ લઈ બાળકોનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો. રમતોત્સવના અંતે વિજેતા બાળકોને ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ, સેકન્ડ પ્રાઇઝ સહિતના મેડલ આપવામાં આવ્યા હતા, તેમજ ભાગ લેનારા તમામ બાળકોને પ્રોત્સાહનરૂપે મેડલ એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા. વાલીઓ માટે પણ રમતો બાદ ગિફ્ટ આપી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. ટીચરો, બાળકો અને વાલીઓના ઉત્સાહથી સમગ્ર કાર્યક્રમ આનંદમય અને યાદગાર બની રહ્યો. સંરચના ધ પ્રિસ્કૂલ દ્વારા આવી જ રીતે બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે વિવિધ કાર્યક્રમો સતત આયોજિત કરવામાં આવે છે. मैं संरचना द प्री स्कूल से बोल रही हूँ और मेरा संरचना द प्री स्कूल 2 ब्रांच है. एक सिल्वर लीफ वाघोरिया डभोई रिंग रोड, दूसरा आदित्य विला वाघोरिया डभोई रिंग रोड. आज हमारा स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स डे था, जिसमें सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया एंड इवन उसमें पेरेंट्स ने भी अपना काफ़ी भागीदारी शो की है. बहुत अच्छी. मैं सोचती हूँ कि इसी तरह सभी स्कूल अपना गेम्स और स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते रहें और ये हमारे देश में अभी भी बहुत ज़रूरत है कि गेम को इनकरेज किया जाए. और इसके माध्यम से हमने ये दिखाया कि किस तरह बच्चे नॉट ओनली स्टडीज़ में, स्पोर्ट्स में भी किस तरह अपनी भागीदारी शो कर रहे हैं और किस तरह से वो अपना रैंक सिक्योर कर रहे हैं. हमने रूप मलखम का भी प्रैक्टिस करवाए बच्चों से, जिम्नास्टिक का भी करवाए जो हमारे बच्चों ने यहाँ पर शो भी किया एंड काफ़ी पेरेंट्स भी, सभी पेरेंट्स आए हुए थे. क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज मैं इसके माध्यम से ये देना चाहती हूँ कि हमारे देश में स्पोर्ट्स का अभी और भी बढ़ावा दिया जाए. नो डाउट कि बहुत हमारे अभी देश हमारा काफ़ी प्रगति कर रहा है स्पोर्ट्स के माध्यम से भी, बट इसमें बच्चों ने जिस तरह से दिखाया कि हम सिर्फ एक एजुकेशन के माध्यम से ही आगे नहीं जा सकते हैं. हमारे देश आगे अगर है तो वो सभी दिशाओं में है. वो स्पोर्ट्स में भी हमारा देश किसी भी देश से कम नहीं और हमारे बच्चे काफ़ी योग्य हैं जो इस तरह से शो कर रहे हैं. आज संरचना द प्री स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स था. इसमें किड्स विथ पेरेंट्स सब ने बहुत एंजॉय किया और जो ऑर्गेनाइज था वो भी बहुत अच्छा था और पेरेंट्स ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, इसलिए आज हम बहुत अच्छे से इसको कर पाए. थैंक यू. देखो, संरचना प्री स्कूल में एनुअल फंक्शन हो या एनुअल स्पोर्ट्स डे हो, एवरी टाइम इतना एनर्जेटिक और न्यू आइडियाज़ होता है कि इवन वी आर एंजॉइंग विद आवर किड्स. पेरेंट्स भी इतने ही एंजॉय करते हैं जितने किड्स एंजॉय करते हैं. विद सेफ एवरीथिंग, सब कुछ फैसिलिटीज़, अरेंजमेंट इज़ वेरी बेस्ट. आज कौन सी गेम्स में बच्चों की फ्रॉक जंप थी, कंगारू रेस था, बटरफ्लाई रेस था. सब इतने लिटिल किड्स इतने क्यूट लग रहे थे कि रियल में वो हम हमारे डेली लाइफ में हम देख नहीं सकते. वो सब आज हमने देखा और हमने भी बहुत एंजॉय किया. एंड सी आवर फेसेस आर वेरी हैप्पी. વડોદરા ન્યૂઝ ગુજરાતી આપણા શહેરના તાજા અને સચોટ સમાચાર માટે ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, યુટ્યુબ અને વોટ્સએપ પર હમણાં જ જોડાઓ. ફોલો કરો વડોદરા ન્યૂઝ ગુજરાતી.